Mr. Prime Minister, listen. Pervez Hoodbhoy. Dawn Editorial. Published November 26, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Defenders of Pakistan's premier public university are fighting a desperate battle to save its land, a fight for the very soul of Pakistan. At stake is survival of the country's only federal university. Still more importantly, this battle's outcome will spotlight national priorities. Should education institutions be sacrificed for building roads or residences for politicians? Can public resistance overwhelm the greed of land grabbers and corrupt officials? The weeks ahead will tell. For a full month, bulldozers had freely rampaged through Quaid-e-Azam University, uprooting hundreds of carefully planted and nurtured trees. They were preparing the ground for a 76-meter-wide Islamabad-Murree highway passing through the university. Temporarily, an order of the Islamabad High Court has stilled these monster machines. Nevertheless, construction work proceeds at breakneck speed at both ends of the campus boundary. Poor governance, vastly amplified by uncontrolled population growth in the surrounding area, is the core problem. A tiny sleepy settlement on Murree Road called Barakahu was once just a few hundred people. Over the years, it has exploded into a disorganized mass of hutments, push carts, shops, and plazas competing for every scrap of land. Unable to bring order to chaos, civic authorities withdrew to a safe distance, leaving the law of the jungle to prevail. The chaos spills over onto Murree Road, slowing traffic to a crawl. The obvious solution is to build an elevated highway passing safely over the settlement. In fact, this 3.5-kilometer plan was originally proposed in 2015 by the government. Approved by the Capital Development Authority many years ago, and by the National Highway Authority earlier this year, it is the simplest and cleanest solution. Seizing a public university's land for a 6-lane highway will bring disgrace, not votes to PMLN. This sensible plan was shelved ostensibly because Barakahu's shop owners didn't want it. However, the truth goes well beyond this opposition. In fact, the real push for using QAU's land came from CDA. Shortly after PM Shehbaz Sharif assumed office, it initiated the QAU bypass idea and obtained approval from the PM. But did CDA honestly inform the PM of the project's consequences and impact? Brief him about the implications of seizing land from a public university for purposes other than education? Tell him that a similar effort in Jhelum was declared illegal by the Supreme Court in May 2009? Was he informed of the knockdown effect upon other institutions? Only insiders can know. Expectedly, the bypass project has released a swarm of demons. The area's land grabbers have smelled blood and have begun contracting speculative deals. Like every Pakistani, including the just-released killers of Parveen Rahman, they know well that demand for land amidst an exploding population far outstrips availability and prices fly through the roof. CDA's project dooms the university because it cunningly splits the university's land into two non-contiguous, non-communicating parts. Land grabbers are lusting for the part next to Barakahu. Largely unbuilt, it has been designated uninhabited wasteland by CDA. But, in fact, this land was meant for creation of new departments, hostels, research institutes, a herbarium, botanical garden, and laboratories. There is excellent reason to fear that the unbuilt part will be stolen. In 2017, the Islamabad High Court had ordered CDA to identify the current boundaries and indicate encroached areas within QAU's original boundary. Known for shady dealing, CDA has not so far complied, possibly because a new map could hinder persons within this organization who grant favors for a price. This is an ominous sign. Even the President of Pakistan, Arif Alvi, seems helpless before the land mafia. As QAU's chancellor, and therefore bearing ultimately responsibility, he asked the QAU administration weeks ago for clarification. However,
the president's office says a reply is still awaited. This is more than fishy, something stinks. Today, of the original 1,709 acres allotted to QAU in 1967, less than 1,250 acres currently remain in the university's control. An estimated 450 acres of university land is presently occupied by encroachers, including a prominent politician. Thanks to CDA's present initiative, several hundred additional acres are shortly going to be up for grabs. The bypass project has created deep fears on one side and, equally, expectations of windfall gains on the other. The polarization is tremendous. On the one side are defenders of the public good who have vowed to protect the university. These comprise QAU students, teachers, alumni, and civic-minded citizens. Conspicuously absent are QAU's vice-chancellor and syndicate members who, for unknown reasons, signed away the university's future without explanation. The terms of the VC and syndicate expired this week. All have moved on to greener pastures. How convenient. On the other side of the divide is a nexus of shop owners, local influentials, and property dealers. Many individuals are all three rolled into one. All shop owners, both small and big, oppose the flyover. Up to a point their opposition is understandable. Getting fair compensation from any government department is never easy and often requires greasing palms. Besides, most cannot show that they actually own the land they occupy. Push came to shove on November 18 at the Convention Center in Islamabad, where a CDA-orchestrated function under the aegis of the Environmental Protection Agency was held. Whereas environmental impact assessments in Pakistan are often mere tokens, this one was breathtakingly brazen. All 19 individuals interviewed for the project's environmental impact, a legal requirement, fully supported using QAU land, but none was a QAU student, teacher, or alumnus. Although the university's 300 defenders were outnumbered by a still larger number of noisy hirelings summoned by the area's property dealers, the EIA was resoundingly exposed as fake. Fortunately, police presence ensured the event ended without serious injuries. The next day QAU went on strike and shut down. Desperate defenders say they will stand in front of the bulldozers if they move again. Shall rule of law prevail? Will public property be protected? Can Pakistan's land mafias be kept in check? In the haste for windfall profits, land grabbers inside and outside the government connive to increase their personal wealth at the expense of public good. PM Shehbaz Sharif needs to review his decision which, if implemented, will increase the nation's despondency. The writer taught physics at QAU from 1973 through 2021, the longest-serving professor in the university's history. Published in Dawn, November 26, 2022. For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. पाकिस्तान की सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी के मुहाफिज अपनी सरजमीन को बचाने के लिए एक मायूस कुन जंग लड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की रूह के लिए एक जंग है। मुल्क की वाहिद वफाकी यूनिवर्सिटी की बका दांव पर लगी हुई है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इस जंग के नताइज कौमी तरजीहात पर रोशनी डालेंगे। क्या तालीमी इदारों को सियासतदानों के लिए सड़कों और रहायशगाहों की तामीर के लिए कुर्बान किया जाना चाहिए? क्या अवामी मुजाहमत जमीन ओहे पर कब्जा करने वालों और बदउनवान ओहदेदारों के लालच को मगलूब कर सकती है? आने वाले हफ्ते बताएंगी। पूरे एक माह तक कायद आजम यूनिवर्सिटी में बलडोजर आजादाना तौर पर तोड़ फोड़ करते रहे और एहतियात से लगाए गए और परवरिश पाने वाले सैकड़ों दरख्तों को उखाड़ फेंका। वो यूनिवर्सिटी से गुजरने वाली 76 मीटर चौड़ी इस्लामाबाद मरी शाहरा के लिए ग्राउंड तैयार कर रहे थे। आर्जी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हुक्म ने इन राकुशस मशीनों को रोक दिया है। इसके बावजूद कैंपस की हुदूद के दोनों सरों पर तामीराती काम ब्रेकनेक रफ्तार से आगे बढ़ता है। नाकिस हुक्मरानी, जो आसपास के इलाके में बेकाबू आबादी में इजाफे की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बुनियादी मसला है।
मरी रोड पर एक छोटी सी नींद की बस्ती जिसे भरकाहू कहा जाता है, कभी सिर्फ चंद 100 अफराद हुआ करते थे। गुज़िश्ता बरसों के दौरान ये झोंपड़ियों, धक्के के ठेलों, दुकानों और प्लाजों के एक गैर मुनज़्ज़म बड़े पैमाने पर फट गया है जो ज़मीन के हर सिकरत के लिए मुकाबला कर रहे हैं। अफरातफरी का नज़्म व नस्क लाने में नाकाम, शहरी हुक्काम जंगल के कानून को गालिब करने के लिए छोड़कर एक महफूज फासले पर वापस चले गए। ये अफरातफरी मरी रोड पर फैल गई है जिससे ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। वाज़े हल ये है कि बस्ती के ऊपर महफूज तरीके से गुजरने वाली एक बुलंद शाहरा की तामीर की जाए। दरअसल 3.5 किलोमीटर का ये मंसूबा असल में हुकूमत ने 2015 में तजवीज़ किया था। कई साल पहले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस साल के अवाइल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से मंजूर किया गया ये सबसे आसान और साफ सुथरा हल है। 6 लेन हाईवे के लिए एक सरकारी यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करना मुस्लिम लीग नून के लिए वोट नहीं बल्कि बदनामी का बायस बनेगा। इस समझदार मंसूबे को बज़ाहिर इसलिए रोक दिया गया क्योंकि भाराकाहू की दुकान के मालिक ये नहीं चाहते थे। ताहम हकीकत इस मुखालफत से कहीं ज्यादा है। दर हकीकत QAU की जमीन इस्तेमाल करने का असल मुहर्रिक CDA की जानिब से आया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ओहदा संभालने के कुछ ही देर बाद इसने QAU बाईपास आइडिया का आगाज किया और वजीर आजम से मंजूरी हासिल की। लेकिन क्या CDA ने ईमानदारी से वजीर आजम को मंसूबे के नताइज और असरात से आगाह किया? तालीम के अलावा दीगर मकासद के लिए एक सरकारी यूनिवर्सिटी से ज़मीन पर कब्जा करने के मुज़मरात के बारे में इसे ब्रीफ करें। उन्हें बताएं कि जेहलम में इसी तरह की एक कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2009 में गैर कानूनी करार दिया था। क्या उन्हें दूसरे इदारों पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया गया था? सिर्फ अंदरूनी अफराद ही जान सकते हैं। मुतवक्के तौर पर बाईपास मंसूबे ने बदरूहों का एक झुंड जारी किया है। इलाके के जमीन पर कब्जा करने वालों को खून की बू आ रही है और उन्होंने कियास आराइयों के सौदे करना शुरू कर दिए हैं। हर पाकिस्तानी की तरह, जिसमें परवीन रहमान के हाल ही में रहा होने वाले कातिल भी शामिल हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि बढ़ती हुई आबादी के दरमियान जमीन की तलब दस्तयाबी और कीमतों से कहीं ज्यादा है। CDA का यह मंसूबा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर देता है क्योंकि यह चालाकी से यूनिवर्सिटी की जमीन को 2 गैर मुत्तसिल गैर मवासलाती हिस्सों में तकसीम करता है। जमीन पर कब्जा करने वाले भाराकाहू के साथ वाले हिस्से की ख्वाहिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर गैर तामीर शुदा से CDA ने गैर आबाद बंजर जमीन करार दिया है। लेकिन हकीकत में यह जमीन नए महकमों, हॉस्टल, तहकीकी इदारों, एक जड़ी बूटियों, नबाताती बाग और लेबॉर्ट्रियों के कयाम के लिए थी। इस खौफ की उम्दा वजह है कि गैर तामीर शुदा हिस्सा चोरी हो जाएगा। 2017 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को हुक्म दिया था कि वो मौजूदा हुदूद की निशानदेही करे और QAU की असल हुदूद के अंदर तजावुजात वाले इलाकों की निशानदेही करे। मशकूक लेन दीन के लिए जाना जाता है। CDA ने अब तक तामील नहीं की है, शायद इस वजह से कि एक नया नक्शा इस तंजीम के अंदर इन अफराद को रोक सकता है जो कीमत के लिए एहसान करते हैं। ये एक मनहूस अलामत है। यहाँ तक कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी लैंड माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं। QAU के चांसलर की हैसियत से और इस वजह से बिलाखिर जिम्मेदारी कबूल करते हुए उन्होंने हफ्तों पहले QAU इंतजामिया से वजाहत तलब की थी। ताहम सदर के दफ्तर का कहना है कि जवाब का अभी इंतजार है। ये मछली से ज्यादा है, कुछ बदबूदार है। आज 1967 में QAU को अलाट करदा असल 709 एकड़ में से 250 एकड़ से भी कम इस वक्त यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में। एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्सिटी की 450 एकड़ जमीन पर इस वक्त एक मुमताज सियासतदान समेत काबिजीन का कब्जा है। CDA के मौजूदा अक़दाम की बदौलत कई सौ इजाफी एकड़ जमीन जल्द ही कब्जे में लेने वाली है। बाईपास मंसूबे ने एक तरफ गहरे खदशात पैदा किए हैं और इसी तरह दूसरी तरफ गैर मुतवक्के फवाइद की तवक्कुआत भी पैदा कर दी हैं। पोलराइजेशन जबरदस्त है। एक तरफ अवामी भलाई के मुहाफिज हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी की हिफाजत का अहद किया है। इनमें QAU के तलबा, असातिज़ा, साबिक तलबा और शहरी जहन रखने वाले शहरी शामिल हैं।
वाज़े तौर पर गैर हाजिर QAU के वाइस चांसलर और सिंडिकेट मेंबरान हैं, जिन्होंने नामालूम वजूहात की बिना पर बगैर किसी वजाहत के यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल पर दस्तखत किए। VC और सिंडिकेट की शराइत इस हफ्ते खत्म हो गए। सभी हरियाली वाली चरागाहों में चले गए हैं। कितना आसान है। तकसीम के दूसरी तरफ दुकान मालिकान, मकामी बासर अफराद और प्रॉपर्टी डीलर्स का गठजोड़ है। बहुत से अफराद तीनों को एक में लपेट दिया जाता है। छोटे और बड़े सभी दुकान मालिकान इस फ्लाई ओवर की मुखालफत कर रहे हैं। एक हद तक उनकी मुखालफत काबिल फहम है। किसी भी सरकारी महकमा से मुंसिफाना मुआवजा हासिल करना कभी भी आसान नहीं होता है और अक्सर हथेलियों को चिकना करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग ये नहीं दिखा सकते कि वो असल में इस ज़मीन के मालिक हैं जिस पर वो काबिज हैं। 18 नवंबर को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जहां माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के ज़ेर एहतमाम CDA के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़िद की गई। अगरचे पाकिस्तान में माहौलियाती असरात का तखमीना अक्सर महज अलामती होता है, लेकिन ये एक हैरत अंगेज़ तौर पर बेशर्मी थी। मंसूबे के माहौलियाती असरात एक कानूनी ज़रूरत के लिए इंटरव्यू किए गए तमाम 19 अफराद ने QAU ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर हिमायत की, लेकिन कोई भी QAU तालिब इल्म, उस्ताद, साबिक़ तालिब इल्म नहीं था। अगरचे यूनिवर्सिटी के 300 मुहाफ़िज़ों को इलाके के प्रॉपर्टी डीलर्स के ज़रिया तलब किए जाने वाले शोर शराबे वाले किराएदारों की एक बड़ी तादाद से कहीं ज़्यादा तादाद में शामिल किया गया था, लेकिन ये IA को जाली के तौर पर बेनकाब किया गया था। खुशकिस्मती से पुलिस की मौजूदगी ने इस बात को यकीनी बनाया कि वाक़या संगीन चोटों के बगैर ख़त्म हो गया। अगले दिन QAU हड़ताल पर चला गया और बंद हो गया। मायूस मुहाफ़िज़ों का कहना है कि अगर वो दोबारा हरकत करते हैं तो वो बलडोज़र के सामने खड़े हो जाएंगे। क्या कानून की हुक्मरानी कायम रहेगी? क्या अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? क्या पाकिस्तान के लैंड माफिया को काबू में रखा जा सकता है? गैर मुतवक्के मुनाफा की उजलत में हुकूमत के अंदर और बाहर ज़मीन पर कब्जा करने वाले अवाम की भलाई की कीमत पर अपनी ज़ाती दौलत में इजाफा करने के लिए मिली भगत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने फैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, जिस पर अगर अमल दरामद होता है तो इससे कौम की मायूसी में इजाफा होगा। मुसन्निफ ने 1973 से 2021 तक QAU में तबीयात पढ़ाया, जो यूनिवर्सिटी की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले प्रोफेसर हैं। अखज़ शदा बतारीख 26 नवंबर 2022। For more upcoming new videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning.